Now we will do metta meditation, which is also called loving and kindness meditation. In this, we try to remember all our near and dear ones, like our parents, our brothers and sisters, our family, our grandparents, our friends, our neighbors, our teachers, and anyone that you are associated with, your colleagues. Try to wish them well. Wish them happiness. May all be happy and well. May all be loving, kind, gentle, compassionate, and help each other, care for each other, share with each other, and help harmony and peace to prevail. May all be happy and well. Bhavatu Sabba Mangalam. Bhavatu Sabba Mangalam. Bhavatu Sabba Mangalam. Sad, sad, sad. We may open our eyes now. Our meditation for today is done. Thank you so much everyone for the group sitting of meditation. It certainly helps to sit together because all of us see each other. All kids are from every home. We know all our families and friends are joining from all over US. Sometimes some of our friends from overseas are also joining. So today we move on to the presentation. Sunilji, do we have Arsh making presentation today? Yeah, Vinayji. Arsh Vasnik is going to present now. Arsh Vasnik is a 6th grade grader from Michigan. He is going to present us on Singh, if I pronounce it rightly, Chinese traveler to India, Chinese Buddhist traveler to India, visit to India, probably some thousands of years ago or hundreds of years ago. Yeah, Harsh, welcome to our online Buddha Vihara. Please go ahead with your presentation. I am making the presenter now. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Can you hear me now? Yes. Yeah, go ahead. Do you see the presentation? No. Do you see the presentation? No, not yet. Not yet. Not it? Hold on a second. Did you share the screen? Yeah, it's coming up. Yeah. You see it now? Yeah. We can see your screen. Yeah. Go ahead. Yes. Hello, my name is Arsh Wasnik. I am in 6th grade. I live in Novi, Michigan, and I am 11 years old. My topic is Huan Sung. He was a Buddhist scholar.
Yunzheng was born in China at the year of AD 602, and as a child he read books about Buddhism. He searched all over to read Chinese religious Buddhism books. And as a child he was very smart, and other people thought he would grow up to be a great man. One day he recited the Mahatma Sutra to an assembly, and the teacher only taught him yesterday. As he got older, he decided to travel to India to get more answers to his questions about Buddhism. Yunzheng was born in China, and he studied Buddhism. Yunzheng was a great traveler, scholar, and translator. He traveled to India by the Silk Route between AD 627 through 643. He went to find more about the Buddha in India. During his travels, he learned more and gained more wisdom. One time he got caught by a lot of bandits. They thought he would be fit to be sacrificed for the goddess Durga. As Yunzheng said his last prayers, his other followers said if you sacrificed him, very bad things will happen to them. So they let him free. And here are the travels of Yunzheng. He traveled from China all the way to the Himalaya mountains, to North India, back to South India, and he went back. This dotted line is for how he traveled back. And yes, the journey was an important part. He traveled 17 years in India on his journey. He wanted to visit all the sacred places connected with the life of Buddha, as well as to learn of Buddhism through study. During his travels, he covered many more places and observed the social, religious, political, cultural, and economic conditions of the country. Yunzheng took with him from India 150 pieces of the bodily relics of Buddha, a large number of Buddha images in gold, silver, and sandalwood, and above all, 657 volumes of valuable manuscripts carried by 20 horses of his escort party. Back in China, he decided to translate some of those manuscripts with the help of several scholars. About 74 of those manuscripts were translated. It may not seem like much, but it helped immensely to the people of China. Yunzheng's services, the spread of Buddhist knowledge in China and India, are inestimable. His story illustrates the greatness of the human spirit in the face of heavy odds. So all of us should devote some time to propagate Buddhism. Also, we should travel and visit our Buddhist pilgrimage to learn Buddhism and our history. Thank you for listening. Jai Bhim. Thank you, Harsh. Very nice presentation. Very impressive. And really, it's a great feat, I can say, because Yunzheng is like 652 AD era, and getting the information about him in details is really, I can say, difficult task. And you explained in very detail about his travel to India and the way he went through the Buddhist places and the way he collected the relics and books, and his interest in Buddhism so much, like he went back to China with 17 horses of escorts. So much immense of knowledge, wow, and
knowledge resource, he took him with him, and that's how the Buddhism has flourished in China. It's a great inspirational story to us. Vinayji, would like to add something? Sure. Thanks, Sunil. Arsh, it was very nice presentation. Thank you so much for making this presentation. Thank you. And we gained a lot. In fact, even I didn't know a lot of things that you put together on the presentation. And I'm sure we, all of us, all our your friends, enjoyed the presentation. Sunil, who all do we have from kids? Can we just take a roll call? Any questions? Any questions? Yeah, sure. Yeah, okay, these are different questions. Ashokji, Anil Gaikwadji, do you have anybody from your side today? Any kids? No. I am Jyoti. No. It was a very nice presentation, Arsh. It had a really good message, and I hope that you keep doing more in the future. Thank you. Thank you. My name is Sakshi, and the presentation was really good. And yeah, I gained a lot of knowledge from it. Thank you, Arsh. Thank you. Kids, please unmute yourself and give the roll call yourself, please. Ask away. Okay. Vinayji, okay. Let me. Okay. Sunil, Shaunak wants to say something. Yeah, please go ahead. I like the presentation, Arsh. Thank you. Thank you, Shauna. Okay. Any kids on the roll call? Please go ahead with your questions. Hello, this is Nirvan and Vivek. Why did he read books? Nirvan's question. What is it? Why did he read books? He's asking why did he have to read so many books? Some of those scrolls or manuscripts contained a lot of knowledge about Buddhism. So it could help monks gain more wisdom and knowledge. So that's why he read lots of books. Thanks, Ash. Very good answer. Thank you. Very good presentation. Thank you. Kids, please unmute yourself and give the roll call and ask questions to Harsh Vasni. That is a good presentation. So looks like Vinayji, I think we have few kids today. Arsh, So Sunil, I have a question for Arsh. please go ahead. Arsh, you mentioned towards the end of your presentation that we should devote our time to propagate Buddhism, Buddha's teaching. If somebody asks us, what are the teachings of Buddha, in short, can you tell us? Can you please repeat it? You mentioned that we should all devote our time to propagate Buddhism, right? Buddha's teaching. If somebody asks us, okay, what do we learn from Buddha's teaching? So can you tell us what will you tell them? We learn how to. That's funny. Okay. So as monks, you gain more knowledge about the world and people. And your meditation is just another reason. When you meditate, you think of helping people and wishing them good luck. It lets them. It's a good way. Yeah. Nice. It's Very a little good hard question.
Very good answer, and it was a little difficult question for a kid to answer, but I'm really impressed the way you answered it. And it is, yes, it is very true that it helps us think of others, right? It makes us compassionate. And why? How does it make us compassionate? By making us wise. And what is the wisdom? Wisdom is that we are all equal and we should be helping each other. So wisdom and compassion, they go hand in hand. Thank you. Buddha was, yeah, welcome. Thank you. Yeah. And that is how Buddha was, right? When we say we take refuge in Buddha, that means we are not worshipping him as a god. We are worshipping him, his qualities. We are saying that we take refuge in your qualities. We want to be like Buddha. We want to be like him, as wise as him, as compassionate as him. He was the one who was compassionate towards everybody in the world. He treated everybody equally. Whether somebody was poor, whether somebody was rich, whether somebody was uneducated, not literate, illiterate, he treated all of them equally, and he taught them according to their ability to understand. Some people, if they wouldn't understand him, then he will tell them really very small stories. So one story I'm going to tell you today, okay, is how many of you get angry? Do you get angry on your friends, on your parents, mama, daddy? Sometimes after coming home, you get angry on your teachers. Anybody does get angry? Or do you get angry anytime? Of course. All of us. Sometimes, right? All of us get sometimes angry. So you know what? When Buddha attained enlightenment, and after that he understood the truth of the world, truth of the nature. And he started, yeah, it's a story, it's coming, story is coming. And he started spreading, teaching everybody how does the law of nature work. Okay, so some people were jealous of him. Some people were really jealous of him because most of the people who will listen to him, they will think, oh, his teachings are so nice, so profound, so good for me. And some of them used to become monks. And some of them used to go and listen to his teachings. Okay? So some of them who were not good people, bad people, they got angry. That why everybody is following Buddha? Why everybody is becoming his disciple? Why everybody is becoming monk? So one day, while Buddha is taking a discourse, this bad guy goes, and he starts accusing Buddha. Oh, is that one? Yeah, he says, you are a bad person. You are taking people from their homes and making them monks, making them leave their homes. You don't know what you talk about. And he started a lot of bad things to Buddha. So any of us, if somebody calls us names or accuses us, we get angry, right? Did Buddha get angry? No. He was absolutely calm and composed. Then that guy, he got all the more angry. Oh, I'm calling him so many names. And Buddha is just not getting affected. He's just not saying anything bad to me. So finally he stops. He says, Buddha, why don't you say something? I'm talking to you. So Buddha says, very calmly, he says, tell me, if you bring me a bouquet of flowers and you try to give it to me, and I say, I don't want those flowers, who do you think those flowers are going to be with? What does the man say? Well, if I brought the flowers, if you don't take it, those flowers will be with me. Buddha says, similarly, all the bad words and all the bad names that you said for me, I don't take any of those. So they go back to you. And he told them,
that when you get angry, you are the first one to hurt yourself, even before you hurt somebody else on whom you are getting angry. So it is such a bad thing. See, when we are so ignorant that we don't know that anger hurts us, we try to be angry on others. And in the process, we hurt ourselves. And you know how Buddha defines anger? He says, Buddha says, anger is like holding a burning coal in your hand with the intent of throwing onto somebody else. So, see, whom does it hurt first? Whose hand gets burned first? It's your own hand gets burned, right? First. So Buddha says, anger is like that. So every time somebody tries to make you angry, remember, anger is in your mind. You can always control your anger and decide, no, instead of saying I will not get angry, we have to say, I will not let anger generate in me. I will not let anger enter in my mind. Let it try anyhow. I am going to be as calm and as composed as Buddha was, right? And then nobody can hurt me ever. So this lesson you have to remember every time you think that you are about to get angry. So how was the story, guys? Did you like it? Arsh, did you like it? It was a good story. Thank you, Sakshi. So do you have any questions for me on the story? Anyone has any questions? Nirvan, Sakshi? No, I don't have any questions, but it was a really good story. Story. Thank you. Thank you. Okay, Sunil. So I think if we would definitely now, I think this was the fourth session, Arsh, that you made today. We had for the previous 3 online viharas, we had 3 other people presenting us. Sunil, I was wondering for the next session we should have some girls volunteer because we have had 4 boys making the presentation. Yeah, Vinayji, that's a really good good idea. So let's take from anyone who can volunteer next session. Can I volunteer? Who can volunteer? Jyoti Chavan. Jyoti Chavan, that's good. I can Very volunteer as well. Any subject you want to announce now, or you want to get back to us later? Great Mulnivasi Women of India. Okay, that's good one. Thank you for coming forward, Jyoti. Sunil J. Mayurji. Yeah, this is Vivek. My daughter is going to also present a week after that then. Okay? Okay, sure. Very nice. Thank you, sir. Now, Vinay, would you like to add anything, or otherwise we can proceed to next program? Let's proceed with the next program. Thank you, Vinay. Thanks for giving us meditation this session. Now we move to next topic, and we have a guest speaker today, Suresh Moon from India. Mayurji, can you please introduce Suresh Moon? Sure, Sunilji. I think Konika is also there, so I would like if Konika can introduce also, but I will highlight briefly about Suresh Moon. I know him from last 1 year. He also joined the online Vihara, I think a few months back. Suresh Moon is from Nagpur, and he is a teacher at Kendriya Vidyalaya, KV school in Nagpur. And he is a great artist and socialist. He also devoted a lot of his time to Bahujan BSP and also other activity. And recently, they are starting the Bahujan Chambers of Commerce
going to highlight little bit about that activity. So it is our pleasure that we have Suresh Moon on this call. So Moon sir, please go ahead and if you can highlight about your activity back in India, and you also can enlighten some of us that you have good experience doing a lot of things there, good and bad experience both. So we can learn from you today. Okay. Are you able to listen me or are you able to see me? Yes, we are able to see you. Jai Bhim, all of you, and Namo Buddhaya. Jai Bhim. जय भीम। जय भीम। हाँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, वो जो एक बच्चा है अर्श, हु इज ही? अर्श मेरा ही लड़का है सर। हाँ, उसको मेरे तरफ से स्पेशल थैंक्स दीजिएगा। नो प्रॉब्लम, है ना? वेलकम, थैंक यू। जाकर के अच्छा आदमी बन सकता है, बिल्कुल अच्छा बनेगा वो। थैंक यू वेरी। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। हाँ, विनया जी, हेलो। हाँ 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 काका बोला। हाँ, ऐकताय ना? हो हो। तुमचं हिंदी में बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों को मराठी नहीं समझ रही है यहाँ पे। ओके, तो हिंदी विल बी हिंदी। थैंक यू। No problem. Yeah. So today my subject is, it is regarding BCCI, Bahujan Chamber of Commerce and Industry. Let me go far as before detailing. I would like to share my thoughts on economy. आज इंडिया में अगर हम हमारे कम्युनिटी के बारे में सोचें तो पता ये चलता है कि हम लोग कहीं पर भी स्टैंड करने लायक नहीं है। कहीं पर भी का मतलब ये हुआ कि ना हमारा रिलीजियस कोई स्टैंड है, ना इकोनॉमिकली कहीं हम कोई साउंड है, हमारी कोई इकोनॉमी नहीं है। पॉलिटिकली नो वेयर, सोशली हम लोग सब स्कैटर्ड हैं। आप लोग सब जानते हैं इस बात को। तो मैंने ऐसे एक सोच बनाई कि अब वो जमाना नहीं रहा कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी मूवमेंट को हम नीचे से ऊपर की तरफ बनाएं। अभी ऐसा समय आया है कि हम लोग किसी चीज को ऊपर से कंस्ट्रक्ट करें और नीचे तक लेकर के आए। विद दैट सेम थॉट हम लोगों ने बीसीसीआई को फॉर्म किया है। बीसीसीआई एक काम करेगी, वो ये कि नेशन बिल्डिंग में आज इंडिया को अगर रीबिल्ड अगर करना है, सो हम लोग ये देख पाते हैं कि हमारा कोई उसमें योगदान नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हाँ आ रही है सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है। काफी लोग म्यूट है क्योंकि वो टीवी का बंद होता है। अब आवाज आ रही है। सर जी, सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी इस मूवमेंट पर अभी कितने एडल्ट प्रेजेंट है मीटिंग में? अभी 15 फैमिली है यहाँ पे, 15 to 16 फैमिली है ऑनलाइन। ओके, देख कुछ लोग इंडस्ट्रियल में है। तो हम लोगों ने बीसीसीआई प्लेटफॉर्म हमने है और अभी रिसेंटली हम लोगों ने बनाया है। Can the host mute everyone? I think there is some background noise. Yeah, Mahesh, can you I muted everyone. Some of them are not mutable. I don't know why. That's the Gaikwad-ji. Please mute yourself. Okay, I think now it's fine. Go ahead. अब ठीक है ना? अब ठीक है सर जी। या कंटिन्यू करिए सर जी। हाँ, तो ये जो बीसीसीआई है, बहुजन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
इसके पीछे थॉट ऐसा है कि देश में आज हम लोगों का एग्जिस्टेंस कहीं पर भी नहीं है, ऐसा हम काउंटेबल एग्जिस्टेंस नहीं है किसी भी फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो सोशलिज्म है या कल्चर है, तो हम लोग कहीं पर भी नहीं है। सो मैंने एक बात देखी कि अगर रिकंस्ट्रक्ट अगर करना है हमारे कम्युनिटी को, सो साइमल्टेनियसली वी शुड थिंक अबाउट रीबिल्ड ऑफ अ नेशन। और जब हम रीबिल्ड ऑफ नेशन के बारे में सोचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जरूरत है हमारी अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी बनानी हम लोग को चाहिए। जैसे आज इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो चलता है, ये इकोनॉमी को रन करने वाले कुछ देयर आर फ्यू फैमिलीज लाइक अडानी और अंबानी लाइक जैसे ऐसे लोग हैं, ये लोग पूरे देश को चलाते हैं, आप और हम नहीं चलाते। इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी जनरेट की हुई है, और जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट होता है, जब भी इलेक्शंस आते हैं, तब ये लोग खड़े हो जाते हैं और ये लोग फंड रेज करते हैं, चाहे वो अपोजिट पार्टी है या रूलिंग पार्टी है या कोई भी पार्टी है पॉलिटिकल, तो उनको ये लोग अपना पैसा प्रोवाइड करते हैं, अपना फंड देते हैं, और जब ये लोग चुन करके आते हैं तो देश के हित में कोई पॉलिसी बनाने के पहले रूलर्स आर जस्ट टू थिंक अबाउट देयर फंड मेकर्स। जो फंड रिलीज करने वाले लोग हैं उनके बारे में पहले सोचा जाता है कि उनको कैसे बेनिफिट हो। सो आज इंडिया के कंस्ट्रक्शन में, रिकंस्ट्रक्शन में उनका योगदान है, आपका और हमारा कोई योगदान नहीं है। हम लोग कहीं के भी नहीं है, न घर के न घाट के। Simply enjoying our slavery, we are simply enjoying our bread and butter, nothing else. हम लोग बहुत इंडिविजुअल हो चुके हैं, हमने कभी अपने नेशन के बारे में सोचा नहीं, देश के बारे में सोचा नहीं, रिलीजन तो बहुत दूर की बात रह गई। सो ऐसे में इस सारी चीजों को मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं, जो कि हमने बनाया है, इस प्लेटफॉर्म को हमने बना करके पूना के होटल हयात में लॉन्च भी किया इन लास्ट मंथ ऑन 27 जून, और उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट हुए थे। उसका एक मोटो ये है कि हम लोग एक ऐसा पैरेलल इकोनॉमी हम बनाएंगे जिसमें सारे लोग इंक्लूड रहेंगे। हम आज जैसे देश में आप देखते हैं कि हमारी हालत थोड़ा, अगर मैं थोड़ा एलोबरेट करूँ तो हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं नजर आता, हम लोग कहीं पर भी नहीं है। फ्यूचर क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि वहां पर अभी जो इंडिया में रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, प्राइवेट जॉब में अगर हमारा बच्चा पढ़े लिख करके जाएगा तो दे आर नॉट गिविंग यू एनी रिजर्वेशन कोटा। सो ऐसे में हमारे बच्चे आगे फ्यूचर में क्या करेंगे? उनके पास दो पर्याय हैं। एक पर्याय ये है कि वो या तो झाड़ू लगाएं या फिर कोई छोटी बड़ी नौकरी कर लें। तो जो लोग बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड होंगे, यस, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, मिडिल क्लास है, उसके लिए फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। He will just struggle for his bread and butter. So हम लोगों ने कुछ ऐसा सोचा कि इनके बारे में हम लोगों ने इनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने बीसीसीआई को फॉर्म किया है। बीसीसीआई क्या काम करेगी? सो बीसीसीआई में बहुजन समाज के जितने यंग जनरेशन के लोग हैं, चाहे मेल है, फीमेल है, हाईली एजुकेटेड है, वो लोग अगर वो चाहते हैं कि भाई हमने जॉब नहीं करना है, हमने किसी की गुलामी नहीं करनी है, हमने अपने पैरों पर खड़ा रह करके बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर्स बनना है, यस, वी आर स्टैंडिंग फॉर देम। हम लोग ऐसे लोग जो भी जितने भी हम लोगों से रिलेट करेंगे, को रिलेट करेंगे, हम उनको हर प्रकार से गाइडेंस देंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करके देंगे, टिप्स देंगे। ये सारी चीज इसलिए देंगे
ताकि ये एक में के हाथ में हाथ डाल करके हमारे बच्चे खड़े हो पाए। जब ये अपने आप को इस प्रकार से बिल्डअप करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर एक इकोनॉमी डेवलप होनी शुरू होगी जो विद इन अस चलेगी। हम इसको और बड़ा करेंगे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, जैसे आप लोग अभी यूएसए में हैं, यूएसए में भी अगर कुछ लोग अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट ओनली, सब लोगों का इंटरेस्ट होगा इसमें। एक हम बुद्धिस्ट इकोनॉमी जनरेट करेंगे, ऐसा कहने में कोई हरकत नहीं है। और ये करने के लिए आज जरूरी है सिद्धार्थ, वो इनको ये बताइएगा वो जो क्या are we the presenter? Can you make us the presenter? Yeah, I will make you a presenter. 1 second, please. Thank you. कुठलं दाखवायचं आहे यातलं? पहिलं दाखवा, हे वाला का? हाँ। Yeah, please go ahead. You are presenter now. Okay, I'm sharing my screen. Let me know when you can see. Yeah, we started seeing your screen now. Okay. They are seeing the screen. बोलिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बीसीसीआई क्या क्या करने वाली है। हमारे जो आई एम नॉट एबल टू सी प्रॉपर्ली, हाँ, बीसीसीआई का जो मिशन जो है, it is to promote communities across industries, representing the unfired voice of employer community irrespective of caste and financial status, reducing transactional friction through well-functioning networks. BCCI has an ambition to sustain prosperity of Bahujan community and to build in its own unique way so that people succeed in what they dream to achieve. इसमें होगा ये कि अगर हम लोग इससे जुड़ते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए अगर जुड़ते हैं, तो वो अपने इंडिविजुअल लाइफ में भी ग्रो करेगा, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको भी ग्रो करेगा, जिस सोसाइटी में रहता है उसको भी ग्रो करेगा, और अल्टीमेटली वो नेशन बिल्डिंग में भी अपना कंट्रीब्यूट करेगा। The BCCI's goal is to create a program of works to help various businesses communities all across India and to create more revenue for them and to improve the economic welfare of the community. Money, planning, inspiration and guidance are useless unless businessmen work vigorously on the committee of their choice. BCCI gives us a platform, and with its 100% transparency policy it becoming an obvious choice. ये हमने कुछ एक्टिविटीज भी अभी शुरू कर रहे हैं, सो ये एक्टिविटी आप लोगों के जानकारी के लिए है। Promoting international trade and businesses in all major sectors. BCCI will give free guidance and assistance to MES, spreading awareness on the current issues and latest technology and tool. Events. अभी हमने एक इवेंट लिया था पूना में, उसको बहुत अच्छा सक्सेस मिला, उसमें बहुत अच्छे लोग आए हुए थे। अभी उसको हम रिपीट कर रहे हैं बॉम्बे में, होटल ताज में। मोस्ट प्रोबेबली in the month of October we are again organizing Bombay chapter, in the name of Bombay chapter BCCI. Likewise we'll have all city chapters in throughout the country. Next, हाँ, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें it is about us. It's a movement for economic reform
आपको मैं एक बात बता दूं कि जैसे आप बाबा साहब आम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, सब लोग बुद्धा के अनुयायी हैं। बुद्धा ने सबसे पहले बहुजन इस शब्द का इस्तेमाल किया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। From that phrase only I have taken this Bahujan word to include maximum people in our this reform movement of economy. मैं बाबा साहब के बारे में आपको बता रहा था कि अगर आप बाबा साहब जी के चरित्र को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन टू डिलीट जितने भी डिग्रीज ली हैं, that is very much closely related to economy. और exactly उनका वही जो thought का जो part है वो still it is in dark in our India. Nobody has just touched it. So it is first time through this banner, yes, हम लोग इस पर ऐसा काम करेंगे कि बाबा साहब के दिलो दिमाग में जो इकोनॉमी थी, देश को बनाने की इकोनॉमी जो उसके बारे में बाबा साहब सोच रहे थे, उसको हम डेवलप करेंगे, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे जहाँ तक हो सकता है। जितने इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हमको मिलेंगे कि जो लोग बाबा साहब की इकोनॉमिकल थिंकिंग को, प्रोसेस को लोगों के सामने लेकर के आए, जिससे हम नेशन को रीबिल्ड कर सकते हैं। So here the word Bahujan is only with the purpose of including all the communities in India irrespective of their caste and creed. BCCI aims to attract and assist those who live the dream to be entrepreneurs and lack the basic knowledge of starting a business and running it. BCCI being a business network has a goal to further the interest of all kind of businesses. BCCI aims to have a common and impartial platform for people from backward and non-business class. BCCI will not only act as a spokesman for various businesses, but will also translate dream into reality. BCCI will enlighten legal, financial, registrational procedures for small-scale industries all across cities and towns in India. Now the next is there. This one? Yes. Sir, I would like to tell about this, आप में से बहुत लोग इनको जानते होंगे, मिस्टर एस.के. पाटिल। हेलो, ये जो सुरेश जी, we are listening to you. Please go ahead, sir. ओके, बात करिए। हाँ, तो ये अभी आप इनको देख पा रहे होंगे, ये है एस.के. पाटिल। ये 70s एंड 80s के दरमियान इंडिया में दिल्ली के ट्रेड फेयर्स में जाया करते थे और वहाँ पर बड़े बड़े जो ट्रेड्स के फेयर्स लगते थे इंडस्ट्रीज के, तो उनको ये देखा करते थे। तो नागपुर से जाते हो कि ये आदमी अपने साथ खाली सूटकेस लेके जाते थे और बहुत सारे उसमें लिफलेट, पम्पलेट, आई कार्ड्स और क्या क्या चीजें लेकर के आते थे। तो हमने इनसे कई बार पूछा कि भाई आप इतना सब जाते हैं और पूरे कागज भर के लाते हैं। तो एस.के. पाटिल वाज आंसरिंग अस कि भाई इंडिया को बिजनेस क्लास के लोग रन करते हैं, हम लोग रन नहीं कर पाते। इनका अपना सपना था कि इन फ्यूचर हमारे कम्युनिटी में से कुछ बिजनेस क्लास के लोग पैदा होने चाहिए, खड़े होने चाहिए। इस बार हमने इसके लिए इनको इसका प्रेसिडेंशियल एक रिस्पेक्ट दिया है। इनको हमने फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ BCCI बनाया है। ही 75+ नाउअडेज। ये वैसे इंडिया में जो इसकी मूवमेंट चलती है बैंकर्स की, SC/ST
बैंक एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल पर चलता है। इसकी ये अपने अपने नेशनल प्रेसिडेंट भी है और ये हमारे सीनियर भी रहे हैं। ये इन्होंने बहुजन समाज की जो मूवमेंट बनानी चाहिए, कांशीराम जी को बनाने का भी क्रेडिट इनको थोड़ा जाता है। इन्होंने उनके साथ में भी काम किया है। इनकी ये जो एक जो छोटा सा पॉइंट मैंने जो मार्क किया था बहुत पहले 70s and 80s में, तो इस बहाने हमने BCCI के बहाने इसको एक शेप देने का प्रयास किया हुआ है। सर एक भी देख रहे हैं ना? एक पिलर एक अब्ज 90 करोड़ 75 लाख सर जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ सर जी। जनरल वी फॉलो द जो एक पिलर पर खड़ा है, फ्लरिश किया गया था सम्राट अशोक के कालखंड में। तो सम्राट अशोक ये बुद्ध का मार्ग जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि श्रम का मार्ग है। अगर आप श्रम करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, तब आपको खाना मिलेगा, तब आपको रोटी मिलेगी, तब आपको सुकून मिलेगा। भारत में दो विचारधाराएं चलती है। एक विचारधारा ब्राह्मणों की है, वो लोग कहते हैं कि भाई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला आपको देगा। और दूसरी विचारधारा है सम्राट अशोक की, बुद्ध कहते हैं कि आपको श्रम करना होगा तब आपको मिलेगा। और श्रम का प्रतीक जो है वो बुल है। तो सम्राट अशोक ने अपने हयात में ये बुल पिलर भी बनाया हुआ था। तो इस बार इस बुल पिलर को हमने अपने BCCI में जगह दी हुई है। इस बहाने हम सम्राट अशोक के भी दिमाग में जो इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जो सोच थी उसको भी हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। प्लस आप ये देखते हैं as per the preamble of Indian Constitution, there must be equality of opportunity which will bring about economic equality and hence for social equality. BCCI hence ensure with the fulfillment of opportunity. This is just a way through which every individual of country, right from a first citizen of country to a mango man, will be supporting and helping hand in the building of our nation's economy. और ये सब हमारे जो महापुरुष हैं, छत्रपति शाहू महाराज है, शिवाजी महाराज है, ज्योतिराव फुले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हमारे जितने भी ग्रेट लीडरों की एक जो लिंक है पूरी कंप्लीट, उनको हम लोग इस माध्यम से ट्रिब्यूट करेंगे, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। इसके लिए हमने BCCI को बनाया है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। Thank you, Suresh Moon ji, for a very nice presentation with lot of details. आप जो भी डिटेल्स दिए बहुत अच्छा है, बहुत पूरा डिटेल्स दिए है। ये आप अपने हमारे पार्टिसिपेंट्स आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्वेश्चन आवर शुरू होता है यहाँ। So let's start with our participant Anil Gaikwad ji from Mumbai. Anil ji, do you have any question? Yeah, I have a few questions. एक तो इसमें ऐसा है कि हेलो हाँ, इसमें ऐसा है कि हमारे पास जो ये मोमेंट चालू हुआ था कि इंडस्ट्रियल लोगों की एक एसोसिएशन बनाना, वो चालू हुआ था डिक्की से। डिक्की के बाद में हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आई बुद्धिस्ट बिजनेस नेटवर्क। उसके बाद में एक आया बुद्धिस्ट इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिर आपका है दूसरा एक BCCI, ये सेकंड BCCI है। तीसरा एक चौथा ऑर्गेनाइजेशन है बुद्धिस्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन। उसके अलावा एक समता उद्योजक
उद्योजक परिषद। जी जी। और इसके अलावा 2 और है, मतलब ऐसे कम से कम 7-8 ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो क्या हो जाता है कि इतने जब ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसा फिक्की है, जैसा एक बिजनेस वालों का एक एसोसिएशन, 1 या 2 एसोसिएशन रहेंगे। जैसा एक महाराष्ट्र में मराठा लोगों का इंडस्ट्री एसोसिएशन है, तो वो लोगों को उसमें लोग सब जुड़ते हैं, उसमें ताकत आती है। अभी हमारे पास 7-8-10 ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो लोग कंफ्यूज है कि आप किसके और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करें। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन खोलने का मतलब क्या है? मतलब जो अपना उठता है, अपना एक बिजनेस एसोसिएशन बनाता है। मेरे पास भी 2 लोग आए थे, उन्होंने बोला था कि विजय एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। मैंने उनको बोला नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतने ऑर्गेनाइजेशन बन के करेंगे क्या, हम कहाँ जुड़ेंगे। बिल्कुल सही। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, आप इतने ऑर्गेनाइजेशन क्यों बन रहे हैं। ओके ओके ओके, ऐसा है। जस्ट लाइक अपने पार्टी जैसा हो गया ना, पॉलिटिकल पार्टी जैसा। मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ। मैं आपके बात से सहमति भी है मेरी। ऐसा है कि अगर आप मुझे ठीक से समझ पाए, एक समय होता है समाज में जब एक हाइपोथेटिकल एक टाइम स्पैन चलता है, एक थॉट अपने आप समाज में डेवलप होना शुरू होता है। जैसे कोई एक लैक्यूना क्रिएट होगा, उस लैक्यूना पर साइमल्टेनियसली बहुत लोग सोचते हुए नजर आएंगे आपको। और जब वो सोचेंगे तो उनकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सोच बनेगी। तो आज जैसे आप कह रहे हैं ना कि सर इतने सारे बैनर्स है, यस, वो कहीं कोई गलत नहीं है। हमारे में सिर्फ प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे में इंटरेक्शन नहीं है। मेरे बारे में आप लोग नहीं जानते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, तो मैं बना रहा हूँ। अगर आप कुछ बना रहे हैं तो मुझे नहीं पता है। सो लाइकवाइज अभी तक हुआ ऐसा है भारत में। अगर आप देखें, महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें, अगर हम इस बात को डिक्की से अगर शुरू करें तो ये डिक्की का बेसिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि डिक्की इज समहाउ समवेयर इट इज प्लांटेड बाई नॉट गुड पीपल। मेरे पास में उसके सारे प्रूफ है। आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये बीसीसीआई प्रॉमिस करता है आप सब लोगों को कि हम लोग सब लोग मिल करके बीसीसीआई को बड़ा करेंगे। बीसीसीआई को बड़ा क्या करेंगे? देश को बड़ा करेंगे। इसमें हमारी नीयत साफ होगी, हमारी नीति साफ सुथरी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। इसमें हमारा अपना इंडिविजुअल कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इसमें इंटरेस्ट होगा वो बहुजन समाज की डेवलप होने का। वो कैसा होगा उसके हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बना करके रखी है। जब कभी आपको मौका मिलता है, हम लोग अभी रिसेंटली अक्टूबर महीने में नागपुर में और बॉम्बे में हम लोग इसके वर्कशॉप लगा रहे हैं। ये ऑल आर मोस्ट वेलकम। इंटरेक्ट कीजिए हम लोगों के साथ में। अगर आप लोग ज़्यादा हमसे अच्छे हैं, yes, we are ready to sit with you. Not only to sit, we are ready to merge ourselves with you. हम लोग इतने साफ सुथरे हैं, बशर्ते आप लोगों की नियत, नीति और ऑर्गेनाइजेशन साफ सुथरा है। अगर वो जो सपना जो हम सोच रहे हैं, ये सपना अगर आप लोगों का है, तो हम लोग सोचेंगे कि भाई हम लोग बैठ करके बात करें, सोच विचार बनाएं, एक बड़ा फंक्शन, बड़ा कुछ करें, सब लोगों को साथ में लेकर के काम करें। Any doubt? Hello? Anil Gaikwad ji. You have any question? नहीं, ये तो इनका सोच बहुत बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसका आई डोंट डाउट कि उनका जो जिस उद्देश्य से उन्होंने चालू किया है। लेकिन अभी मेरे को इतना मैं पर्सनली बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर अपन ये नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर जैसा उन्होंने बताया कि डिक्की फॉर्म करने के पीछे किसी लोगों का हाथ है, किस लोगों का हाथ है वो सबको पता है। और इसके उनके उद्देश्य क्या है ये शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और मैं उद्देश्य तक मैं पहुंचा हूँ, और ये उद्देश्य चीज ऐसी है कि मैं जो इस ओपन फोरम में नहीं बोल सकता। तो वो जो मैटर है वो एक बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। और वही मैटर को ये बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन वही मैटर को एक्सपोज कर रहे हैं
और उसका एक परिणाम कुछ दिनों के बाद 1 मिनट एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। उसका एक परिणाम जो है कुछ दिनों के बाद सभी लोगों को समझ में आएगा, और वो परिणाम अभी ये मैं बात नहीं कर सकता हूँ पर्सनली इसमें ये मोहरम पे, लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बीसीसीआई का कॉन्सेप्ट मैं जब 1999 से मिस्टर मिलिंद कांबले से मिला था तब डिस्कस हुआ था, 1999। उसके बाद में 2005-6 में उन्होंने बनाया, लेकिन उसके पीछे कुछ और चीज है और वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अब मैं बहुत लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को अभी भी पता नहीं चल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा कुछ हो सकता है। जी, ये आपको सभी आप पर्सनली मिलेंगे तो बात करेंगे। बिल्कुल। हाँ सर जी, मैं ये कह रहा था। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है, एक बात मैं आपसे शेयर करूं कि ब्राह्मणों की कोई बात को लोगों के बीच में रखने के लिए उनके पास में 1000 हाथ है, हमारा नहीं हो सकता? हमारे भी हो सकते हैं। हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, हम लोग एक में को कोऑपरेट करके भी चल सकते हैं। बराबर है, आपका बिल्कुल कहना बराबर है, एक दूसरे को एक कोऑपरेट करके ही आगे जाएंगे, लेकिन ये तो वही पॉलिटिकल सीन हो गया ना। फिर नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में हुआ है, हम किसी एक बैनर के नीचे नहीं आ रहे, उसी तरह हम बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते जा रहे और हम इकट्ठा नहीं हो रहे, तो अगेन वो सेम बात हो गई ना। उसमें डिफरेंस क्या है? हम लोग बिजनेस के लिए बैनर, हम लोगों ने बिजनेस के लिए बैनर नहीं बनाया, कि पहले आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करने के लिए या बिजनेस माइंडेड पीपल को इकट्ठा करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपका तो ट्रस्ट है, आपका तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है। अनिल जी 1 मिनट, या सो सुरेश मून जी 1 मिनट, या आई थिंक अनिल जी हैव मोर क्वेश्चन, सो यू कैन टॉक टू, आप उन्हें फोन करके बात कर सकते हैं। थैंक्स अनिल जी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। Yeah, let's move to next question. The question is it's coming from शशांक कामले जी। इन्होंने पूछ रहे कि कुछ BCCI तरफ से कुछ बिजनेस ट्रेनिंग का है क्या प्रोग्राम? यस, बिजनेस ट्रेनिंग के हमने कैंप्स बनाए हैं, डिजाइन किया हुआ है, और हम उस बिजनेस का ट्रेनिंग कैंप को अक्टूबर महीने से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो बिजनेस का एक ट्रेनिंग जो कैंप होगा, इट विल स्टार्ट ताज। कितने दिनों का ट्रेनिंग हो सकता है ये? दैट विल बी फॉर 3 days। ओके, थैंक यू। इसके बाद में कुछ फीस का कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है? फीस विल बी देयर, बिल्कुल नॉमिनल होगा। हम लोगों ने ऐसा उसको प्रोग्राम को डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा बैक एक्सपीरियंस है उस मामले में, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने इस बैनर को लॉन्च किया था होटल हयात में, तो हमने सब लोगों ने मिलकर के एक फाइनेंशियल उसका स्ट्रेटेजी बनाया हुआ था। उसमें पता चला कि भाई अगर सब लोग अगर 3-3 हज़ार रुपये अगर दे देंगे तो ये उसमें सब लोगों का एडजस्टमेंट हो सकता है। तो आज का भी हमने ऐसी कुछ किया है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल अराउंड 3500 समथिंग पर पार्टिसिपेंट। उसमें उनका डिनर आ जाएगा, लंच आ जाएगा, और बाकी की सारी चीजें आ जाएगी। उनका जो रेसिडेंशियल है उसको भी हम लोग इंक्लूड करने का सोच रहे हैं। थैंक यू सर जी। अब विवेक चौहान जी आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे। विवेक जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओके, या थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। जय भीम मून सर, नाइस प्रेजेंटेशन। और मुझे एक दो क्वेश्चन है, यदि आप अलाउ करेंगे पूछने के लिए तो। एक क्वेश्चन था, बीसीसी जो नई ऑर्गेनाइजेशन खोली आपने BCCI, ये फंडिंग कराती है? यानी कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो? अभी एट दिस मोमेंट तो नहीं, लेकिन यस वी हैविंग दैट काइंड ऑफ डिजाइन आल्सो विद अस, कि कुछ लोग जुड़ रहे हैं। तो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी बड़े लेवल पर जो लोग काम करते हैं। आपको पता होगा कि भारत सरकार जब अपना बजट बनाती है तो भारत सरकार के पास में बहुत बड़ा बजट का एक फंड होता है जी। वेलफेयर का फंड होता है, कंस्ट्रक्शन का फंड होता है। आप देखते हैं कि वो बड़े बड़े रोड वगैरह जो बनते कैसे बनते हैं, तो भारत सरकार के
बनाती है, वो रोड बनाने के लिए उनके पास में एक एजेंसी होनी चाहिए। तो अगर हमारी एजेंसी अगर है, बीसीसीआई का प्लेटफॉर्म है, उससे रिलेटेड अगर कोई बिजनेसमैन है, यस दैट टेंडर विल बी गिवन टू हिम। अच्छा, तो और एक दूसरा एक क्वेश्चन था मेरा उसी क्वेश्चन को लेके कि जैसे अभी एनआरआई जैसे यूएस में बसे लोग हैं, यूएस सिटीजन वगैरह, ओके, तो उनको क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? उनको अपॉर्चुनिटी ये है कि वो पहले तो इंटरेक्ट करें, क्योंकि अभी मेरी सुबह बातचीत हो रही थी इंडिया में, तो इंडिया में भी बहुत लोग बीसीसीआई से जुड़े हुए लोग हैं, दे आर ईगरली वेटिंग टू अपना दायरा बढ़ाने के लिए वो लोग भी सोच रहे हैं। उनकी भी सोच है कि भाई अगर यूएस में बैठे हुए हमारे बंधु लोग हैं, यूके में बैठे हुए अगर हमारे लोग हैं, अगर वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं, बिजनेस को लेकर के इंटरेक्ट करते हैं, कुछ अगर हम ऐसा शुरू कर सकते हैं, तो इट विल बी ग्रेट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर नेशन। राइट। अच्छा, और एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन, ओके, मैं कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है जो आप फोकस करें या इस इंडस्ट्री लाइक ओपन टू एनी इंडस्ट्रीज? ओपन टू ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑल काइंड, ओके ओके। चलो, वो ट्रेडिंग है, मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, आई मीन ये है ना, भंगार का भी एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस होता है। अच्छा, और एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक would you like do you guys help locating infrastructure areas or like in the facilities or anything in case if someone wants to open business start business in India, do you help locating a place or something like that? Definitely. That's our moral duty to support us. Okay. All right. Thank you very much for the answering the question. Suresh, thank you very much allowing me to speak. Thank you. Over to you, Sunil ji. Hello, anybody has any question to Moon? Hi, Jai Bhim, this is हाँ सर जी, दिस इज पंकज मेश्राम। मुझे पंकज मून सर के लिए। जय भीम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस प्रेजेंटेशन। आपने जो आइडियाज और ये प्रेजेंट किया है दैट इज वेरी गुड। मुझे सवाल ये है कि क्या फाइनेंसिंग में मदद करते हैं? अगर कोई आइडिया लेके आता है and they want to have some help with respect to financing, तो क्या आप उसमें मदद करते हैं और किस तरह की फाइनेंसिंग के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है या हो सकते हैं? हमारे पास बैंक फैसिलिटी अवेलेबल है ना। हमारे पास में हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत पैसा रखा हुआ है and they want to invest that amount in right direction. तो यस, देयर आर अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल असिस्टेंसी क्रिएट करने की हमारी अपनी क्षमता है ही। हम लोगों ने ऐसे कुछ लोगों को पॉइंट आउट किया हुआ है, दे आर इन आवर रिलेशन। तो ये मतलब आर दे नेशनलाइज्ड बैंक, आर दे कोऑपरेटिव बैंक्स और नेशनल, मोस्टली नेशनलाइज्ड बैंक। ओके, इसमें जो एस के पाटिल जो है, जिनकी तस्वीर इमेज हमने अभी आपको बताई, ये खुद बैंक ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के। तो वो कहते हैं कि भाई आप हमारे पास में बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आओ, हम आपको पूरा हेल्प देने के लिए तैयार हैं। अब हमारे सामने समस्या है कि हमारे बच्चे नहीं है कुछ अवेलेबल जिनको हम सामने कर पाए। तो यस, अगर आप में से कुछ लोग हैं, दे आर विलिंग टू कम फॉरवर्ड, yes, most welcome, we will be there. अच्छा, और छोटे लेवल पे क्या है, मतलब अगर छोटे छोटे बिजनेसेस चालू करने हैं या छोटे छोटे कोई आइडियाज है, देयर आर पीपल हु वांटेड टू डू सम। यस, मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ में एक सखी मंच है जिसको हमने कुछ 5 साल पहले शुरू किया था बीड़ में। बीड़ नाम से एक शहर है उधर परभणी के पास में। तो वहाँ एक लेडी हमने पॉइंट आउट की थी,
और उस क्रांति गवई, उसको हमने पॉइंट आउट किया, उसको हमने थोड़ा सा ट्रेन किया। तो पिछले 5 साल में आप देखिए कि उस लेडी ने खुद का अपना एक एम्पायरशिप डेवलप किया हुआ है। किसमें? उसके पास में आज की डेट में 1.5 लाख महिलाएं हमारे अपने समाज की इकट्ठा है। छोटे छोटे इंटरप्रेन्योरशिप वो कर रहे हैं, तो कुछ गृह उद्योग है वो बना कर रहे हैं। सैनिक वो क्या कहते उसको, पेपर नैपकिन का इंडिया का पूरा जो टेंडर है उनके लिए मिला हुआ है, वो लोग काम कर रहे हैं उसमें। 1.5 लाख औरतें काम कर रही हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में डाले हैं। काफी है, बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बताऊं कि हमने एक क्या कहते उसको ऐप भी डेवलप किया है, ऐप भी लॉन्च किया है। BCCI के नाम से ऐप है। हमारी अपनी कोशिश है सब कि जितना हम लोगों के बीच में जा सकते हैं, बड़े पैमाने पे जा सकते हैं। हमारा मकसद है कि इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट करना, इकोनॉमिकली स्टैंड करना एज ए सुपर पावर। इसमें जितने लोग साथ दे सकते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। हम लोग कोई पूर्ण नहीं है। आप लोगों के साथ में जुड़ करके, आप लोग हमारे साथ में जुड़ करके हम एक में को पूर्ण करेंगे। हाँ जय भीम सर जी। मतलब एक और कमेंट ये था कि आर देयर एनी एफर्ट्स कि हम हमारी इकोनॉमी ड्रिवन कॉन्सेप्ट्स लॉन्च करें, जैसे कि अगर हम कोई एज अ कंज्यूमर इफ वी आर बाइंग समथिंग वी गो आउट टू बाय इट फ्रॉम आवर ओन shops. So do we have a network of people like that? Is there a yes, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे इसमें है ऑलरेडी, हम उसको सब डिजाइन कर रहे हैं। अगर आप हमको देखना चाहें, आप हमारा ऐप ओपन करें। BCCI के नाम से एक ऐप है, ऐप स्टोर में जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम एक बैनर है सर, जो बहुत ईमानदारी के साथ, हमारा अपना इसमें कुछ भी इंडिविजुअल कुछ स्वार्थ नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, फ्यूचर में इट इज पॉसिबल कि आज मेरे पास में मेरे अपने जो एसेट्स है वो उतने ही रहेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। नहीं सर जी मतलब ऐसा कोई नहीं ठीक है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट इट कैन बी टेकन एनीवेयर राइट, बट नहीं हाँ एक और क्वेश्चन है सर जी कि क्या पंकज मिश्र जी। यस सर। अभी बहुत सारे लोग दे वांट टू आस्क देयर क्वेश्चन, सो can you take this question offline if you don't mind? Yeah, I'll take the question offline. लेकिन अगर मैं एक पूछ सकता हूँ तो मुझे ये पूछना था कि अब तक आपके पास कितने कोई सक्सेस स्टोरीज है जहाँ पे आपने एंटरप्रेन्योर्स खड़े किए हैं? आई मीन आपने मेंशन किया सखी मंच का क्रांति गवई, तो इस जैसे और कोई आपके पास सक्सेस स्टोरीज है जहाँ पे आपने बिजनेस डेवलप किए हैं या एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे के कोई बिजनेस अभी स्टैंड अप है? हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि हम लोग अपने आप को हाईलाइट करें। फाइनली हमने जाकर के अभी जो ये पिछले महीने के 27 तारीख को इस बैनर को हमने लॉन्च किया है। अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाएं या आप हमसे पर्सनली मिलें, yes, we will be able to tell you about success stories of our people. Okay, thank you sir. Jai Bhima. Thank you sir. Let me take calls in alphabetical order. Okay. So now I will request Anita Gaikwad ji if she has any question. Anita Gaikwad ji? No. Okay, let's go to Mahesh Pasnik ji. Mahesh ji, do you have any questions sir? No. Okay. I discussed with Moon sir. हाँ, इनके साथ में बाय द वे इन्होंने हमको घर पर बुलाया था खाना खाने के लिए। बड़ा अच्छा सुंदर खाना भोजन दिया। ओके सर जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू आशीष जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे? नो आई एम गुड, थैंक यू। ओके सर जी। अविनाश सारे जी, अविनाश जी, any question? Okay, let's go to next person, Dalaji. Dalaji, okay.
Let's go to Girish Ramtekki ji. Girish ji, do you have any questions, sir? No question. No question. Okay. The whole in detail. Let's go to Sandeep Chavan ji. Sandeep ji, do you have any questions, sir? No, I think I thank Suresh ji for sharing the information. I just have one question. How many? What is the website? Is first thing BCCI ka, or second thing is how many people are there whose turnover is more than 100 crores in their setup currently who are enrolled? Yes, pardon, please. No, how many people are there whose turnover is more than 100 crores? At present, I have in that way 7 people. Okay, great. Yeah, that's great. So then we'll go to Neelaj ji. Neelaj ji, do you have any questions? No questions, just one comment. Great work, Suresh ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Be with us, please. Next question comes from Parag ji. Parag ji, you want to ask some question? Yeah, sure. Thank you, Moon sir. Ji. Wonderful thing. I have one question. Just Indian government has raised nearly 200 crores of the venture fund. And anyone who wants to approach that one, how will you help them? उसके लिए हमारे पास में सारे लिंक्स हैं. हम लोग उस लिंक पर काम कर रहे हैं. क्योंकि मैंने जब उनका एप्लीकेशन पढ़ा, वो लोग डिक्की के थ्रू भेज रहे हैं एप्लीकेशन. यस. तो डिक्की वैसे भी हम लोगों से सीनियर है, उनको काम करने हो चुके हैं, तो डेफिनेटली वो लोग हमसे आगे रहेंगे और वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है. हमारा सिर्फ सोच ये है कि भाई हम लोग सब लोग इकट्ठा हो जाए और हमारे कम्युनिटी का हम लोग उनको ग्रेट बनाए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग चाहें. नहीं, ये आइडिया बहुत अच्छा है, बट अभी एक एंटरप्रेन्योर है जो वो फंड को अप्लाई करना चाह रहा है, तो आप लोग उसको अप्रोच करने में मदद करोगे? बिल्कुल. सेंड हिज एप्लीकेशन टू अस. ओके, थैंक यू सर. उसमें सिर्फ जज्बा होना चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. पराग जी, आपके बारे में थोड़ा बताइए तो अच्छा रहेगा. मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ. अभी मेरे कुछ बिजनेस प्लान्स है जो कि मैं वेंचर फंड्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. एक की मेडिकल इमेजिंग फील्ड में है, डायग्नोस्टिक चेन, और हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं. गुड. मैं आपको बिजनेस प्लान भेज दूंगा. आपसे बात करता हूँ मैं पर्सनली. हाँ. और मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा थोड़ा सा सब लोगों के लिए कि अभी जब हम लोगों ने 27 जून को इसको लॉन्च किया था, वी गॉट वन फेलो, ही पोहनकर, यह यंग चैप आदमी, वो क्या कहता है पता है? वो कहता है कि सर, दिस इज द बैनर थ्रू विच आई कैन एक्सप्लोर माई आइडियाज. उसकी आइडिया क्या है? वो कहता है कि आने वाले समय में मैं डॉलर की कीमत ₹1 करके बता सकता हूँ. डॉलर की कीमत ₹1 करके बता सकता हूँ. अच्छा. और उसके पास में उसका फुल प्रूफ उसके पास में वर्कशीट है उसकी बनी हुई. वो कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट खुद घबराती है मेरे वर्कशीट पर काम करने के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट खुद बायस्ड है. इंडियन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हम लोग डेब्ट में रहे, हम लोग नुकसान में रहे, कर्ज बाजारी रहे, दुनिया भर के कर्ज हमारे लोगों के ऊपर में रहे. खुद इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हमारा देश सुपर पावर बनना चाहिए. और मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स खुद देखे हैं. दिक्कत ये कि हमारे पास में ऐसी आवाज है, लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है. सो यस, दिस विल बी द प्लेटफॉर्म. ऐसे बहुत लोग हमको मिलेंगे, बहुत लोग सामने आएंगे, तो एक बड़ा कुछ करेंगे. 8 साल हो गए देश को पीछे रख करके, साल में अच्छा कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. कांटेक्ट करता हूँ. मुंसर जी, सिद्धार्थ को बोलिए कि आपका ईमेल एड्रेस और फोन नंबर शेयर करिए करके इस चैट विंडो पे. ओके. तो सबको कभी ऑफलाइन बात कर सकते हैं. काफी लोगों को क्वेश्चन है अभी. जी महेश जी, मैंने शेयर किया है. ओके. चैट, द फोन नंबर, ईमेल आईडी. Okay, thank you. Suresh@gmail. Yeah.
Parag, would you like to share your contact information as well? Sure. Okay. Thank you, Sirji. Let's go to next question from next participant. Pankaj Sirji, do you have any questions? R.S. Pankaj from Jaipur. Yeah, I have got one question. First of all, I want to congratulate for a very good venture for our people on economic field. Thank you very much, sir. And another question is that about relying on funds. Yeah. You have mentioned that we will definitely try to share the allocation from budget. Yeah. And allocation from budget, now there will be a long queue. There are so many organizations, as earlier our friend has mentioned. Now government will have a very lame excuse. No, there are so many organizations to whom we should allocate our funds. Because last time, after a great effort, they allocated only 200 crores after a long persuasion by Dicky. Yeah. And as they will, you see, judge which organization will be siding their political views. So they will prefer that organization for fund allocation from the budget. Yeah. So we or rather your organization will not be sharing their ideas, their economic policies, and will not pursue their principles on economy. So won't you feel some difficulty in allocation of funds from the budget? Because our finance minister, so many times our people have asked them to have a meeting with us for the funds. So he said, I don't have time. You come, all the people, you can come and join together in a common platform. Yeah. So likewise he wanted to avoid. So there, and as you have mentioned, the Ambani Adani people, they are the big hurdles. They can force the government to give the minimum allocation of fund to these organizations. They don't want to see our people to grow economically, and they will try their best that fund allocation will be minimized in the most minimum. For name's sake, they may allocate. So we should not rely on these people very much. Yeah. And about bank loans, Mr. Patil is having contact. Of course, he is having contact with Bank of India and all that. But what about the rate of interest? Because I have observed allocation of loans for any venture of our people.
the rates of interest are very high. Yeah. So that two main problems are there. So if you have got some solution for these problems, then well and good. Hello. Thank you. Hello. Thank you. Okay, should I talk? Yeah, please go ahead, Suresh. Yeah. सर ऐसा है, आपने जो बात बताई ना, इट्स राइट, लेकिन इट इज अप टू सब certain extent. Fact is not like this. There are many loopholes in allocation of fund. अभी तो जो है, जो फंड भारत सरकार का बनता है वो सारा का सारा वो लोग खा जाते हैं. Yes. And that is in huge amount. अरबों रुपया भी ना, उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतना पैसा है. तो जैसे मान लीजिए उसमें से 200 करोड़ भी अगर हमारे लोगों के लिए अगर मिलता है, सो इट इज डेफिनेटली ए बिग अमाउंट. अगर वो अगर डिकी को भी मिलता है तो वो तो हमारे ही लोग हैं. उससे प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. शर्त यह है कि उसमें से हमारे कम्युनिटी का बिजनेस होना चाहिए, हमारी कम्युनिटी ग्रेट होनी चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए. और ये तब होगा जब हम लोग सब यूनाइटेड रहेंगे. और आपने बैंक के बारे में बताया, तो बैंक के बारे में आपको बताऊं कि उसमें एक क्लॉज है, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो आप बैंक को डुबो सकते हैं. सारे गुप्ताज बनियाज दे डू दिस. उनके ये लोग रुपये लेते हैं, कैसे डुबोते हैं, कैसे एक रात में आग लग जाती है इनके फैक्ट्री को, कैसे इंश्योरेंस का पैसा मिलता है. ये सारे लूप होल्स उनको पता है, हम लोगों को पता नहीं है. हम देश के साथ में ऐसी कोई गद्दारी नहीं करेंगे, ना कम्युनिटी के साथ में कोई गद्दारी करेंगे. देयर आर राइट वेज. इस तरीके से हम पैसा भी अर्न करेंगे, समाज का भी भला करेंगे और देश का भी भला करेंगे. सबसे पहले देश का भला करेंगे. Thank you, Sir Ji. Thank you. Let's move to next person. Raman Siddha Chabukeshwar Ji. Any question? No questions, please. Okay, thank you. Then Rayamsh Jitendra Ji. Okay. Let's move to Vinay Ji. Vinay Ji, do you have any questions, sir? We know. If it I'm. Hello. Yeah. Hello. This is Milind. Vinay has got little stuck up. So I know it's little long, but we had an opportunity to meet with Moon sir. So that was very good. I just want to have a quick question. So let's say, if we want to visualize the most thing that should have been done by this organization, at the end of it, what can you visualize that says that okay, the BCCI work is done, it's good, this is how we want it and this is how it is. So what is that scenario? Please repeat the question, sir. Yeah. So अंत में जब आप कब कह सकेंगे कि BCCI का काम और हो चुका है, अच्छा हो चुका है, हमें जो पैरेलल इकोनॉमी चलानी थी वो चल रही है, वो कैसी चल रही है, तो वो सिनेरियो क्या है? वो सिनेरियो ऐसा है, वो विजुअलाइजेशन में इस तरीके से करता हूँ कि जिस दिन हमारे देश में बाबा साहब की जो इकोनॉमी का जो थॉट है वो फ्लरिश हो चुका होगा, वो एक्सप्लोर हो चुका होगा, जिसमें सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, स्पेशली बुद्धिस्ट लोगों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट, बॉटम ऑफ आवर एनर्जी. और जिस दिन मेरा देश जो ना बहुत बड़ा हो चुका होगा, बेटर देन या अमेरिका, क्योंकि दो दिन में मैं अमेरिका को कुछ काउंट कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यस, अमेरिका का परफेक्ट बनने का जो काम है वो आज भी पूरा नहीं हुआ है. दो इट लुक्स दे आर ऑल इनपरफेक्ट, बट दे आर वर्किंग टुगेदर डे एंड नाइट फॉर मोर बेटरमेंट,
और बेटर परफेक्शन। तो जिस दिन मेरा देश उस लायक बन जाएगा, वो भी बाबा साहब के विचारों पर आधारित, उसमें भी आर्थिक विचारधारा जो बाबा साहब की, उस पर चल करके मेरा देश जिस दिन जल्दी से जल्द खड़ा हो जाएगा, और जिस दिन हमारे लोगों पर कोई अन्याय नहीं होंगे, अत्याचार नहीं होंगे, बल्कि हम लोग एक डिसीजिव फैक्टर के रूप में रहेंगे। नेशन में कौन सी पॉलिसी हमने लॉन्च करनी है, कौन सी पॉलिसी रिजेक्ट करनी है, ये जब पावर हम लोगों के पास में आ जाएगा, उस दिन मुझे लगेगा कि ये बीसीसीआई का काम यहाँ पर कामा लग रहा है। खत्म नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, पूरा हो रहा है। मैं उस सपने के लिए जी रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि आप सब लोग अगर जुड़ जाएं इसमें, बाय कोर ऑफ योर हार्ट, हम थोड़ा सा पैसा दे दें, थोड़ा सा टाइम दे दें, और थोड़ा सा इंटेलेक्ट दे दें, तो मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए वो दिन दूर है। एक मोदी इतना बड़ा काम कर सकता है, हम लोग इतने लोग हैं, वो भी बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं, हम लोग नहीं कर सकते? यस, वी मस्ट डू इट, just for the sake of our great leaders. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Suresh. No, the last question, if there is any, from Sujit ji. Sujit? Yeah. Sunil sir, I do have a question actually. I was a little busy to handle my kid. So, Suresh sir, Jai Bhim, it's a very beautiful thought that we are bringing, I mean, Baba Saheb's thought process in the building up the economic strength as a backbone of our people. That's very nice. But I do have a question. I don't want to divert the complete session. I'm going to call you and we'll ask the other question. But the main question is that what syllabus or what will be the agenda that you will be covering in the session that you're going to take in Mumbai and the one you mentioned in your talk. Okay. सर ऐसा है कि अभी हम लोगों ने एक तो डिज़ाइन ऐसा किया है कि इंडिया में जितने मेट्रो सिटीज़ हैं, कैपिटल एंड सब कैपिटल्स हैं, आपको बम्बई के बारे में जानकारी कि बम्बई हमारे इकोनॉमी की कैपिटल है, तो हमने टारगेट बनाया है कि बॉम्बे रीजन से कम हमारे साथ में 10,000 एंटरप्रेन्योर्स जुड़ने चाहिए। उन 10,000 में से कम 1,000 एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अपने पैरों पर खड़े हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी वे टू हेल्प समवन। एक बात। दूसरी बात ये कि बाकी के जो लोग हैं जो नौकरी नहीं करना चाहते, पढ़े लिखे लोग हैं और वो बिजनेस में खड़ा होना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ट्रेनिंग देंगे, वहां पर उनको हम बूस्ट करेंगे, उनको गाइडलाइन देंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, वो सारा उसका हमने शूट बनाया हुआ है। सो दैट वे वी विल बॉम्बे चैप्टर फ्रॉम बॉम्बे। ऐसे नागपुर के लिए होगा, ऐसे पूना के लिए होगा, ऐसे इंदौर के लिए होगा, हर सिटी के लिए होगा। राइट। सो उसमें एजेंडा मतलब क्या मतलब उसमें बताएंगे क्या, मतलब सिलेबस क्या है? जैसे काफी सारा फील्ड है कि मतलब बिजनेस बोला तो इट्स ऑल ओवर द प्लेसेस। यू कैन डू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यू कैन डू ग्रो विद, यू कैन डू मेनी थिंग्स ओवर देयर। इसके लिए स्टॉल्स है हमारे पास में, हम लोग सब लोगों के स्टॉल्स लगाने वाले हैं। जिसको बैंक का कोऑपरेशन चाहिए तो बैंक का स्टॉल होगा वहां पर लगा हुआ, तो बैंक वालों से बात करेंगे, हमारे लोग रहेंगे वहां पर। किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर लाइसेंस के लिए कोई प्रॉब्लम है, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, कुछ बनाना है, तो ये हमारे एक्सपर्टाइज वहां बैठ करके हैं। आपकी जानकारी के लिए एक मिनट जस्ट मिनट, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो बीसीसीआई में एक लड़का है जिसका नाम है दीपक दिघाड़े, इसको मैंने 8-10 साल पहले खड़ा किया हुआ है। ये आदमी आज की डेट में 1 करोड़ रुपए का एक जहाज खरीदी करता है, भंगार वाला जहाज, डैमेज वाला शिप, उसको डिसमेंटल करता है ये आदमी 3 महीने रख करके, पोर्ट पर रख करके, और फिर मेल्टिंग हाउस को बेच देता है। तो 1 करोड़ के 3 करोड़ रुपए कमाता है वो। एंड ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो उसके अपने बंदे होंगे वहां पर आपको गाइड करने के लिए।
से सारे सेक्शन बिजनेस से जितने सारी चीजें अवेलेबल पॉसिबल है वो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट just to fulfill all the requirements, not on paper only, practically. ओके ठीक है, समझ गए। बहुत अच्छा सर, वो यही जानना था कि हमारे पास एक्सपर्ट पीपल है और वी ऑलरेडी हैव अ प्लान टू एग्जीक्यूट दोज प्लान फॉर अमंग द एंटरप्रेन्योर दोज हु आर लुकिंग एज अ करियर। सो सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड एक इनपुट है सर, जैसे आपने बोला कि मुंबई, इंदौर, पुणे ये सब जगह आप करने वाले हैं, बट विवेक सर ने भी बोला था कि यूएस में जो बंदे हैं जो जिनको करना है, राइट, तो उनके लिए क्या, तो मैं बस बोलना चाहूंगा, मतलब एक जस्ट पुटिंग वन थॉट कि आप जैसे हम लोग अभी वेबएक्स मीटिंग कर रहे हैं, सो यू कैन ऑर्गेनाइज दोज थिंग्स फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज here the people are coming from India to US and they want to start something, but they don't have much guidance like you are providing. So that platform we can get it and we can implement those things. Even this will not cost hotel or dinner or whatever the cost will require for the organizing in the India in the hotel. So that's one thought. I mean, if you get a chance, so you can just contact Anna or AM, so these people can join through the WebEx and get the knowledge from you, and they can ask the questions regarding that. Definitely, it's a requirement of time. Right. It's a right requirement of the time. अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल करने वाले हैं। अगर आप सब लोग अगर साथ में रहते हैं राइट कॉज के लिए, तो हम टाइम को भी रिड्यूस कर सकते हैं। Exactly. Thank you, sir. Thanks for your questions, and thanks for Suresh Moon for sparing his valuable time to us and dispensing very valuable information to us. In fact, it is a very motivating factor to all of us. Thank you, Suresh ji, and definitely the proposal what came up at the last, we will keep in touch with you. And definitely, we can hold sessions with you in the future on behalf of BCCI, and requesting our participants to participate more and more and get a good flip to BCCI in future. And thanks for joining us today. Mahesh, would you like to add any? Okay. Suresh, thanks a lot once again. And let's conclude the session today here. Thank you, Konika Munji, Siddharthji, for coordinating the program. Okay, we will meet again next week at the same time. Till then, Namo Buddhaya and Jai Bhim. Namo Buddhaya and Jai Bhim to you all. Thank you.